Namaste everyone. Good evening. Namaskar everybody. So it's a very good afternoon to all the ladies and gentlemen. Thank you for joining us for Q3 for financial year 2024 earnings call. So hope you have already gone through the presentation which we have already uploaded on the exchange. Before I go into the past quarter performance, I would like to update you with some of the key information, couple of strategy updates which we have to announce. That is, first is we have already signed an MOU for purchasing a 10 acres land in Wada in Maharashtra. So that is in line with our strategic decision. And this expansion is in line with our strategic highlight, which in our earlier calls we have been telling you that to fund our growth and servicing to our clients in a better way. The expansion will be carried out in 3 phases. The first phase will be in all across all 3 segments which we are there, that is metal drum, IBCs and plastic drums. So first line will be, one line will be IBC, 2 lines will be SDP drums of 210 liters and 50 liters capacity, and 1 line with for MS. So for first phase largely will get completed within 2 years, and it has approximately revenue opportunity of 150 crores. And simultaneously first phase 2 and phase 3 will be a replicating of phase 1, and capex for phase 1 will be around 40 to 45 crore, and including purchase of land, and the capex for line phase 2 will be approximately 25 to 35 crores approximately, as the infrastructure and common facilities will be covered in phase 1. So we have and coming on to our ongoing expansion, so that we have increased our metal drum capacity from 30,000 to 50,000 using automation, and we have also acquired an adjacent land of unit 6, so wherein we will raise the capacity up to 90,000 per month. And moving to unit 7, where the line 1 of our IBC is already at a capacity of 40%. So as soon as it will reach 50%, we will plan for additional line, second line that is. We have also decided to merge unit 7 and unit 8. So unit 8 construction is already going on, so we will going to merge unit 7 and 8 for better efficiency, where we will add SDP drums and IBC capacity as we go forward and see the opportunity coming up from the market. Now moving on to the financial for the quarter ending December 23. So our revenue from the operations stood at 128 crores. That is up by 6% on year to year. If you see, margins were impacted little due to challenges are experiencing regarding there is a continuous fall in the raw material prices, when SDP prices are down from around 112 per kg to 99 per kg. And at the same time, we have been experiencing some Red Sea disruption, that is a supply disruption happening with our chemical companies. That is why there is an impact of SDP prices. And but still, our revenue for the 9 months, if you see, it is 399 crore, which is up by 11.757% from 9 months 2023 to 9 months 2024. Despite the challenges highlighted, we have gained market share. Our volumes have grown by for the 9 month 2024 period. The IBC volumes have increased by 24%, metal drums by 30%, and SDP drums by 11%. If you see in the volume, encountered some price impact of raw material. As per the norms of the industry, typically raw material prices changes are reflected in prices with 1 or 2 month lag. The lag affected our EBITDA margins also. We, however, continue to broaden our, which was around 400 customers in the
Q2 financial year 2024 to 500 plus now. We are confident that this is the opportunity which we have got to continuously increase our customer base, focus on customer service. We are confident that our optimization and operation assets, implementing backward integration in our plants, which we are already doing, and we are focusing on further doing on backward integration. Cutting edge technology will aim at improving our margins going forward. We anticipate a turnaround once the raw material prices stabilize, which I'm sure in coming quarters it will happen. Balance sheet still remain healthy. We have a net cash balance sheet now. We expect to continue maintaining a healthy balance sheet, and capex is expected to be funded from internal accruals with zero cash balance to maintain net zero balance sheet. We remain optimistic about the future and are committed to delivering value to our stakeholders. And this is all temporary phase, which we understand which is happening in chemical industry. So there are supply disruption, there are Israel war going on. So Russia war happening. But still we are focusing more on adding customer base month on month basis, and our volumes has definitely has increased. Thank you very much. So now we are open for the question and answer. Thank you, Jay sir. Anyone who wishes to ask a question, please raise your hand using the reaction button and we'll take the questions. So we have the first question from Mr. Vikas Kasturi. Please go ahead, sir. Hello, namaste, sir. Namaste. Sir, I was looking at your presentation and it says that you have manufactured about 1.5 lakh IBCs in these 9 months, and you have a capacity of about 4.5 lakhs. So are you likely to hit that 4.5 lakh mark anytime soon? 4.5 lakhs, 4.5 लाख जो IBC आप बोल रहे हैं, ये पूरी की पूरी यूनिट इतनी चलती नहीं है साहब, 80% पे ही एक प्लांट चलता है कभी. Okay, so the maximum capacity 80% होगा sir? Yeah, हाँ, the peak capacity, 100% capacity what we say. ठीक. Sir, एक और question IBC पे. Sir, you have said your market share is about 40% in India, right? In the presentation. But sir, अगर मैं सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, सर अगर मैं एक और लिस्टेड प्लेयर है, अगर मैं उनके आईबीसी नंबर देखता हूँ, पहले 6 महीने में उन्होंने करीबन 3,30,000 आईबीसी बनाए, और आपके पहले 6 महीने में 1 लाख के करीब था आईबीसी. तो अगर सिर्फ आप दोनों का मार्केट शेयर में देखता हूँ तो आपका 25% के करीब होता है सर. तो 40% कहाँ? उनका जो देख रहे हैं ना, मैं 3,30,000 पूरे वर्ल्ड का है उनका आईबीसी का, इंडिया का नहीं है. तो मेरे को जहां तक समझ में. अच्छा, got it sir, got it. What is the source sir for this information 40%? ये लगभग अप्रोक्स मार्केट सोचते हैं हम लोग कि 50 से 60 हजार का मार्केट होना चाहिए इंडिया में, जो हम लोग का एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है ये किसी भी हालत से, लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि ये इतना मार्केट साइज है. We are anticipating 60,000 IBCs market per month right now. So as per the industry data, as per customer data, we have been evaluating month on month basis. Okay, got it, sir. And if a polymer player wanted to start manufacturing IBCs today, तो उसको कितने साल लगेंगे सर वो बनाने में, मतलब पूरे सारे approvals लेने में वगैरह वगैरह? 2 साल में कोई भी आ सकता है, 2 साल के अंदर कोई भी चालू कर सकता है, 2 years में. अच्छा, but आपका it is more like you have a steady business from your chemical customers. Is that the understanding, sir? मतलब because it's a critical component, they keep giving you repeat business. हाँ, लेकिन क्या है, वो भी नए आने के बाद भी साहब, कोई भी नया वेंडर जब आता है तो उससे इतनी जल्दी कोई लेते नहीं है. उनकी क्वालिटी सेट होनी चाहिए, सब सही होना चाहिए, कुछ हमारे से उसको तकलीफ होनी चाहिए, तो चेंज होता है. इतनी इजी नहीं होता जरूर है, लेकिन कोई ना कुछ कारण से होगा, ऐसे किसी कारण से चेंज नहीं होता. Okay. Thank you, sir. Thank you for your answers. I'll come back in the queue. Okay.
Thank you. We have the next question from Darshat Voda. Please go ahead, sir. Yeah, hi. Thanks for taking my question. So, I just have a simple question. मेरा simple सवाल है कि आने वाले 2 से 3 साल में you can call it guidance या internal target जो भी हो, where do we see ourselves in terms of top line, मतलब revenue या कोई kind of growth metric कितना हो सकता है? Like, what do we see? देखिए, हम जो नया डाल रहे हैं और सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि 4 से 5 साल के अंदर यहाँ से डबल करेंगे। We are anticipating 53% growth every month, year on year basis on the top line. 20% ऐसे बिना किसी नए लोकेशन के हम कर रहे थे, 10 से 15, 20 से 20%। अभी नए लोकेशन से हमको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। Okay, so आप please repeat कर सकते हैं वो क्या figure था? 52? 15 से 20% हम करीब हर साल देखेंगे, फ्यूचर में हम ग्रोथ करते हैं। अभी जो भी हम जिस पुराने लोकेशन से ही, अभी जब नए लोकेशन में जा रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि हम 4 से 5 साल के अंदर यहाँ से डबल होना चाहिए हमारा बिजनेस रेवेन्यू वाइज। ओके ओके। और मार्जिन वाइज हम लोग स्टेबल यहीं पे रहेंगे या आगे देखिए, आएगा? मार्जिन तो हर समय इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी मार्जिन जरूर बढ़ना चाहिए। ये टेम्पोररी फेस है, रॉ मटेरियल का प्राइस रेगुलर 1 साल से डाउन हो रहा है, उसमें कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन ये चेन है, कभी ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ऐसा रहेगा। मेरे को लगता है कि जो बॉटम होना है हो गया है, यहाँ से कुछ ना कुछ रिवर्स हो जाना चाहिए। ओके Raw material ओके prices ओके bottom of what we are anticipated, and we have a feedback also. So now prices are going up. which अभी will जो gonna पॉलीमर reflect- बनाने वाले हैं वो भी लॉस कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है बेचैनी है कि कैसे प्राइस बढ़े, या तो कुछ प्लांट जो है लॉस में होंगे तो बंद होने लगेंगे पॉलीमर के, उसके बाद पॉलीमर मार्केट सेट हो जाएगा, प्रोडक्शन Okay. कट करेगा तो उसके बाद सेट हो जाएगा। the SDP companies which are there worldwide locations. ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you. We have the next question from Runit Kapoor. Please go ahead, sir. Yeah, thanks for the opportunity. So I wanted to know, in your presentation, you have mentioned that for 9 months, FY24, your trading income is, I think, 12%. So basically, what is the sudden rise of the trading income? Like usually it's 5 to 6%. So why was the higher trading income from trading of polymers this time? And what is the margin from this segment? ट्रेडिंग में सर 4 से 5% की मार्जिन होती है, ये अपॉर्चुनिटी Okay. पर है। हम कैपिटल करते रहते हैं, माल नहीं मिलता है तो उनकी जरूरत के हिसाब से लेने आते हैं। वो कोई एक फिक्स बिजनेस नहीं है हमारा ट्रेडिंग का। हमको अपॉर्चुनिटी होती है तो हम उसमें कमा सकते हैं तो हम उसको दे देते हैं, नहीं तो हम नहीं देते। वो जरूरत के हिसाब से बाई है उनकी, बाय करते हैं तो हम देते हैं, उस समय हमको भी कुछ फायदा हो रहा है। In future this will go, ये नीचे जाएगा या फिर improve, like या ये कितना राउंड stable रहेगा? ट्रेडिंग बिजनेस में मैं कभी पैसा नहीं खोता हूँ। हमारा मोनोपोली ट्रेडिंग में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारे पास कुछ मटेरियल आते हैं, वो एडवांटेज होता है, उनकी जरूरत के हिसाब से लेके आते हैं तो हमारे को उसमें बेनिफिट ही मिलते हैं। Okay. And one more thing was in terms of IBC, like I wanted to know, like what would be like your mix, expected mix in like FY26 when all the plants are ready, like IBC and polymer and so on. जो भी ये देख रहे हैं यहाँ पर जो बिजनेस है वो सारा बिजनेस यहाँ से डबल हो जाएगा, हर चीज का। पॉलीमर का भी होना चाहिए, पॉलीमर का ग्रोथ जो है वो 30% 30%, बाकी का बिजनेस ज्यादा ग्रोथ करेगा। आईबीसी यहाँ से डबल होना चाहिए हमारा। नहीं, I'm talking about mix क्या रहेगा? Somewhere around 35 to 40%. Would be IBC. Only one. Okay, and the IBC, if I'm not wrong, is a higher margin business, right? Yes. Okay, fine. And just some sense, so your net, I understand your net debt free. So do you have some gross debt also, because there's some interest costs in the P&L? So how much is that amount? The amount of It is hardly some amount, so I need to check in the balance sheet. 6-7 crore is there gross. Okay, so that would be paid by this year end. So these are basically सीसी लिमिट का है वो सर, वो जो डेप्थ देख रहे हैं ना वो सीसी Okay, लिमिट है। okay, okay. there is no this advance basically. टर्म लोन नहीं है कुछ भी। टर्म लोन वगैरह Okay. जो एक्सपोर्ट की गाड़ी लेते हैं वो सब टर्म लोन लेते हैं,
जो अपने हिसाब Okay, से। fine. So, but there's no plan to raise debt as such, like. No, there is no plans. We have sufficient Okay. cash back. Okay, and any organ like expansion to acquire any player or something like in the segment, like any smaller players or something, in organic growth, like. We have not come across any opportunities, but if any opportunity comes, we are open to that. That's not an issue. Okay, thank you. That's it from my side. Thanks, Ronit. The next question is from Priyank Parekh. Sir, please go ahead. Yeah, thanks for the opportunity. Sir, in terms of outlook, short and medium term outlook, हम FY24 and FY25 का क्या देख रहे हैं? किस चीज का सर? Overall revenue top line. 24 में हमारे को लग रहा है जो 550 के आसपास का आना चाहिए टॉप लाइन। Okay, and 25 overall? 25 में लगभग 15% मतलब 650 के आसपास पहुंचेंगे, 620 to 650। उसके पहले यदि हमारा यूनिट कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट हो जाए तो उसमें कुछ ज्यादा दिखेगा। नया लोकेशन जो हम कर रहे हैं वहां से मिल जाएगा तो हम उसमें और भी ज्यादा जा सकते हैं। We are focusing on to start at least one line there. कोशिश कर रहे हैं कि 6 से 8 9 महीने 10 महीने में जितनी जल्दी हम चालू कर सकें। Start the revenues in the FY24. Okay, so considering खाली वॉल्यूम में ही ग्रोथ आएगा, मतलब रियलाइजेशन यहाँ पे जो है वो स्टेबल रहेगा तो भी हम ये जो टारगेट बोल रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ होगी तो प्रॉफिट भी बढ़ता ही है ना सर। नहीं, सो जो हम टारगेट्स अभी एस्पायर कर रहे हैं दैट इज कंसिडरिंग द वॉल्यूम ग्रोथ ओनली, राइट? हम समझिए 80% यूज ही कर रहे हैं ना अपनी कैपेसिटी को लगभग। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती है वैसे से बाहर गुजरात में भी प्लांट एड होगी, लोकेशन अभी जगह है हमारे पास, और महाराष्ट्र में नया लोकेशन पे हम चालू करेंगे तो दोनों जगह से वॉल्यूम ग्रोथ। Unit 8 is infrastructure we are building only for that, so that any expansion comes we have a ready infrastructure available. So we are investing in infrastructure is ready, so as the demand will increase we will add up the machine and just will take the advantage. So we will not need to add infrastructure at that time. The idea is that. Okay. Sir, can you throw some light on the Red Sea issue? How exactly it is affecting us? Are revenue getting hampered or are costs getting increased? How it is playing out? डेप्थ पेमेंट करने का एक मेरे दिमाग में था कि डेप्थ को हम क्लियर कर दें। No, sir. I'm asking about Red Sea issue. नहीं, वो क्या हमारे कस्टमर को नुकसान हो रहा है अभी, उनका जो फ्रेट कॉस्ट वगैरह बढ़ गया केमिकल इंडस्ट्री में, तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा उनको इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उससे हमारे को बहुत ज्यादा इफेक्ट, हमारा जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही है उसमें। ये जब भी टर्न अप होगा पॉलीमर मार्केट उसके बाद ये रेवेन्यू अलग दिखने लगेगी। ओके, तो ये डिमांड ओवरऑल हमारी हैम्पर हो रही है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग। वॉल्यूम तो हम कर ही रहे हैं ना, डिमांड हैम्पर नहीं है। Demand wise volumes have increased, only the numbers have gone down in terms of pricing, because the prices is going down, and then the Red Sea, what is Red Sea is Red Sea our chemicals exporters, so their sea rate is higher. So what raw material we are getting, we are paying additional freight cost. This is a दूसरा temporary कारण है phase. ये रेड सी होने के एक्सपोर्ट का लॉस हुआ, इंडिया के जो एक्सपोर्ट जा रहे थे वो थोड़े कम हो गए हैं रेड सी के बाद। Okay, got it. Sir, on the last thing I want to ask about is raw material का जो price decrease हुआ है उसके कारण the realization has gone down. So, but I want to ask, हमारा कोई अरेंजमेंट नहीं है हमारे कस्टमर्स के साथ कि वी वुड बी एबल टू पास ऑन द इंक्रीज और डिक्रीज टू देम? वो सिस्टम है, उसमें सिस्टम ऐसा है कि हर महीने हम लोग रेट नहीं देते हैं उनको, जो रेट कम होता है तो कम करके देते हैं, बढ़ता है तो बढ़ा के देते हैं। लेकिन सडनली ये पहली बार ऐसा है कि पूरा एक साल पूरा ऐसा नीचे जा रहा है मार्केट, तो हर बार हमको उसको नीचे करके रेट देना पड़ता है, वो हमारा टर्म्स है। और पहले भी कभी हुआ है ऐसा एक बार, लेकिन उसके बाद फिर घूम जाता है, ये कोई सब दिन ऐसा नहीं रहता, क्योंकि पॉलीमर जो भी बना रहे हैं उनको भी इस रेट में नुकसान हो रहा है।
Okay, so what I am trying to ask कि जो हमारा रियलाइजेशन में नुकसान हो रहा है, aren't we going to recover it anytime soon? डायरेक्शन के नुकसान नहीं कहिए, इसको स्टॉक का नुकसान कह सकते हैं। जैसे हमारा जो भी स्टॉक चल रहा है, हर बार जब रेट कम है तो उसमें हमको नुकसान हो रहा है। रियलाइजेशन उतना ही मिल रहा है जितना मिलता है। जैसे सोने की दुकान में जितना सोना है, वो जब कम हो रही है तो कम में बेचे तो बढ़ जाता है, और सोने के दुकान वाले का स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाता है। वैसा ही है तो अभी हमारा इन्वेंटरी का क्या पोजीशन है सर? जो एवरेज हम हर समय रखते हैं वही है, कभी भी कम बेसी नहीं होता। मैन्युफैक्चर वी हैव टू कैरी इन्वेंटरी। एक महीने का इन्वेंटरी हम लोग लेकर ही चलते हैं, जिससे प्लांट Okay, कभी हाँ, that I understand सर, लेकिन हमारा मतलब are we sitting on gain or loss on the inventory we are sitting in? अभी अभी एक महीने से घूम गया है मार्केट इधर। एक जो जनवरी से देख रहे हैं, कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ने लग गया है। Yes, the realization have increased, prices have gone up, so we are able to pass on to the customers also. Oh, okay, got it. I'll join back the queue. Okay, thank you. Thank you, Priyank. We have the next question from Roshan Shetty. Please go ahead, sir. सुन रहा है? हेलो, नहीं है सर, आइए अभी आइए। नमस्कार। आ रही है ना आवाज? हाँ आइए। या नमस्कार। ये आई एम रेफरिंग टू स्लाइड नंबर, ये जो आपका की हाइलाइट्स है, उसमें आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि रॉ मटेरियल प्राइस कम हो गया है, जो अभी प्रीवियस कंटेस्टेंट को बोला है। एंड टेल मी वन थिंग, मुझे ये आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि रॉ मटेरियल प्राइस कम होगा तो अपना रियलाइजेशन बढ़ जाता है, बट इधर ये समझ में नहीं आया फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है। नहीं, रॉ मटेरियल जब भी प्राइस कम होते हैं तो जो भी रेट कम हुई तो उतना कम करके हमको सामने वाले को देना पड़ता है। हमारा टर्म्स जो कस्टमर के साथ है, जब रेट बढ़ती है रॉ मटेरियल की तो बढ़ाते हैं, कम होती है तो कम करते हैं। तो हर हालत में कोई भी आदमी यदि रेट कम होगी तो कम करके ही सेल होता है। बट इसमें मार्जिन इम्पैक्ट हो रहा है, फिर वो कैसे हो रहा है? वो स्टॉक के कारण, स्टॉक के कारण हो जाता है। स्टॉक के कारण हो जाता है। स्टॉक अपना कैरी फॉरवर्ड हो रहा, मान लीजिए 120 रुपए का, और रॉ मटेरियल घटते घटते भी 100 रुपया हो गया, तो 20 रुपया स्टॉक का कम हो गया ना सर। ओके, सो 30,000 25,000 मान लीजिए 2,500 या 3,000 टन हमारे पास हर समय रहता है, तो वो 3,000 जो स्टॉक कैरी करते हैं हर समय, तो उसके रेट तो उतना तो लॉस हो ही जाता है ना उसमें। और ओके, तो सडनली आप 10 रुपया कम हुआ है तो ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। ओके, बट अभी आई नो ये बहुत शॉर्ट है, नेक्स्ट क्वार्टर कैसे दिख रहा है? मार्जिन सेम रेंज में रहेगा जैसा Q1 में है? सॉरी, जो अभी लास्ट ये जो क्वार्टर हुआ है, या मार्जिन बढ़ेगा, कैसा है नेक्स्ट? जनवरी में भी बढ़े हैं रेट, फरवरी में बढ़े हैं सर। Local prices have started increasing from January onwards. This month also on the 1st of February prices have increased. So बेटर होना चाहिए। yes, the things have started reversing, and the inventories what we have, we will fetch higher margins on. So are you saying, so I mean, I was there in the last call as well, wherein you had clearly mentioned that there is no margin issue as such. So whatever जो भी हम लोग बनाते हैं, हम लोग at जो इसके पहले का क्वार्टर का मार्जिन का 10-11% जो भी था मार्जिन, वो रेंज में हम लोग बेच सकते हैं, एंड जहां भी कम ज्यादा होता है हम लोग इजीली पास ऑन करते हैं विद अ 1 month लैग। अभी विद दैट स्टेटमेंट एंड ये क्वार्टर का जो नंबर्स आया, वेयर इज दिस मार्जिन डिक्लाइन? सो इट लुक्स लाइक कि हमको भी मार्जिन प्रेशर है। नहीं, मार्जिन का प्रेशर जो भी है वो स्टॉक का है, प्लस मार्जिन जो हमारे को पॉलीमर ड्रम में आईबीसी में अभी भी अच्छी हुई है। ये मेटल ड्रम में इस मार्जिन ज्यादा शॉर्ट हुआ है, इसलिए वो ज्यादा दिख रहा है। एवरेज देखने जाते हैं because we have increased the so we are going aggressively in the market to capture the market, and then once we capture the market, we'll start getting the margins there. So we have bifurcated also our numbers, and we have analyzed.
So now, if you see that we have increased our volume from 30,000 to 50,000. ईपी डाटा देखेंगे तो सर पॉलीमर में हमारा 10.21 है, आईबीसी में 12.42 है और मेटल ड्रम में 2.27 है। तो उसलिए तीनों एवरेज करते हैं तो वो कम दिख रहा है। फोकस इज नहीं, वॉल्यूम में तो कोई क्वेश्चन, वॉल्यूम्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग इट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो क्वेश्चन है ही नहीं। बट क्या था कि मेरा एजम्पशन ये था कि मार्जिन्स कम नहीं होगा, बिकॉज यू हैड क्लियरली मेंशन कि हमारा जो पास ऑन होता है एवरी मंथ का होता है एंड इट्स वेरी स्विफ्ट। एंड अभी प्रीवियस बंदे को भी आपने वही बोला है। सो मेरे को ये बताइए, तो नेक्स्ट क्वार्टर का मार्जिन कितना लेके आई कैन एज्यूम इट? तो सेठी साहब पिछली बार भी बोला था, मार्जिन अभी भी इफेक्ट नहीं हुई है, मार्जिन इस बार भी हुई है। लेकिन जनरल क्या होता है मार्केट में, एक महीने में रेट बढ़ जाती है, कोई 2 महीने में कम हो जाती है, फिर कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा डायरेक्ट पोल जो है पूरे हर समय नहीं होता। एक रीजन तो होता है। दूसरा रीजन क्या है, इस बार भी मार्जिन अच्छी है अपनी। मार्जिन जो कम हुई है वो मेटल ड्रम में हुई है। मेटल ड्रम का मार्केट में शेयर करने के लिए थोड़ा प्राइसिंग कम करके शेयर मार्केट का शेयर लिया हूँ। अभी भी हम देखेंगे तो पीवीटी मेरा जो है पॉलीमर ड्रम में 8.26% है, आईबीसी में 10.79 है। इसमें हमारा मार्जिन नहीं 1% के आसपास ही है मेटल ड्रम में। तो एवरेज मार्जिन जा रहा है तो वो 8.45 हो रहा है, लेकिन ऐसे आईबीसी वगैरह में अच्छा ही है मार्जिन अभी। और अभी ये जो कोरोना के कारण जो थोड़ा बहुत इफेक्ट है वो पॉलीमर मार्केट सेट हो गया, तो वो सामने अगले क्वार्टर में दिखेगा कि थोड़ा बेटर हो रहा है। ठीक है, समझ गया। सेकंड इज जो की हाइलाइट्स में वही लास्ट पॉइंट जो लिखा है आपने, सो द केमिकल सेक्टर आउटलुक इज बिट वीक एंड आपने जो रेड सी डिस्क्रिप्शंस भी मेंशन किया है। वेरएज अभी आपने प्रीवियस कैंडिडेट को जो बोला है कि केमिकल सेक्टर इशू, मतलब सेमी सेक्टर जो वीक है उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रेड सी डिस्क्रिप्शन से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं बोलूं रेड सी वगैरह एक्सपोर्ट कम हो गया इंडिया के, और जो वॉल्यूम और बढ़ सकते हैं, ये रेड सी वगैरह यदि प्रॉब्लम निकल जाएगा तो एक्सपोर्ट जो जा रहे थे वो कॉस्ट उनका बढ़ गया, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं जा रहे, वो इफेक्ट हो रहा है। मानी ग्रोथ यहाँ से और भी ज्यादा होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है इस रीजन से। ओके, और केमिकल सेक्टर का जो आपने वीक कमेंट लिखा है वो कैसे अंडरस्टैंड करूं, ये अपने बिजनेस के लिए, पिरामिड के लिए? लेकिन यही दोनों चीज एक ही है, यदि वो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे तो अपना बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा, वॉल्यूम और अच्छे बढ़ सकते हैं। अगर वीक ही रहा तो नहीं, अभी जो हो वॉल्यूम सकता है, तो वीक में हो रहा है, जो वीक है मार्केट केमिकल मार्केट, उसके आगे वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ये जो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो ये और तेजी से ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ, ठीक। Thank you. We have the next question from Mr. Manan Shah. Please go ahead, sir. Hi, sir. I just had one question that are we looking to add more products in our portfolio or some value-added products, or are we going to continue the 3 existing products? अभी तो 3 चल रहा है सर, देख रहे हैं, यदि कोई अच्छा प्रपोजल आएगा समझ में आएगी तो जरूर ऐड करेंगे। We are not saying no for it. We are definitely open. We have been exploring also, but right now the current situation, we are adding up our new locations, and we will like to go to multiple location in coming future also. So this is the one of the strategic move which we have come across. That is adding a new location as in Maharashtra. Further more plans to add in new locations, which we are exploring. At the same time, new. Okay. Also, we are exploring the new products also portfolios. Okay, so the new plants you've added, you're not sure which are, you can add new products in that also, right? Yes, we have an infrastructure ready. We will add up the new products, and when the opportunity comes. इंफ्रास्ट्रक्चर या जो जगह हमने महाराष्ट्र में ली है वो भी बड़ी ली है, उसमें भी हम जगह है कि और कुछ बढ़ा सकते हैं। महाराष्ट्र यूनिट has been भी कर सकते हैं या पुराने प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ाएं। Considered only because we have taken a 10 acres parcel, wherein any future new expansion with existing facility plus new product portfolio, we can do that easily with the current infrastructure what we are adding up in Maharashtra. Okay, got it. Thank you so much.
Thank you. We have the next question from Mr. Parth Kotak. Please go ahead, sir. Hi, sir. First of all, congratulations for a good set of numbers, particularly in a challenging environment. विजय कुमार जी, काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर हो गए हैं. मुझे सिर्फ ये समझना है, आई थिंक कैपेसिटी वाइज क्लियरली वी हैव नो चैलेंजेस. इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमने अपने कंपनी के पास में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि कैपेसिटी होने के बाद भी एंड इंडस्ट्री की डिमांड वीक होने के कारण हमारे वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं. आर देयर एनी चांसेस अकॉर्डिंग टू यू के आने वाला साल शायद काफी चैलेंजिंग रहे केमिकल इंडस्ट्री के लिए और हमारे वॉल्यूम शायद डी ग्रो हो कैपेसिटी होने के बाद भी? अभी तक तो ऐसा मेरे करियर में नहीं हुआ है कि वॉल्यूम कम हुआ हो. वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है. So initial outlook for chemical is very temporary phase. Next year, hopefully things will turn around, because if you see in chemical segment also things have started turn around, because we have been talking to our customers, so their prices have started increasing. At the same time, HDP prices have also started increasing. Plus, India is a growing country. Population is growing. So India has a lot of more potential for domestic demand also. So we will gonna cater to that demand also, and hopefully for the next quarter and coming years, our outlook is looking good. And packaging industry, the outlook always. Perfect. और सर लास्ट क्वेश्चन, इफ इट्स देयर इन द पब्लिक डोमेन, हमारे टॉप कस्टमर्स कौन है और टॉप 10 कस्टमर्स वुड बी हाउ मच परसेंटेज ऑफ आवर रेवेन्यू? दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. या तो सर मैंने आईपीपी समय में हमारे टॉप 10 में कोई भी 5% वाले कस्टमर एक है, बाकी सब बहुत कम है. मैंने हम जोड़े थे कुछ 20 कस्टमर में, हमारा जो रेवेन्यू आता है कुछ 15 से 20%. Around top 20 customers account for around 20% of our revenue as on date. Perfect, all sir. those top customers are green chip companies. 500 के आसपास कस्टमर है साहब, वो इशू नहीं है हमारा. And our focus is to keep on adding good customers and month on month basis. So that will keep on adding our volumes. That will not go down for sure. Right, sir. And आपने अभी mention किया, I think our competitor is doing exports. शायद हम export market में अभी तक dip नहीं हुए हैं. Do we plan to start exports going ahead? We are doing IBCs particularly. We are doing exports. The volume is very small as on date. It is only one customer we have been servicing. One more customer we have added recently, and hopefully in coming months we will add more customers in our exporting IBCs to neighboring countries. That is very encouraging, sir. Wish you all the very best for the future. Thank you very much. Thank you. We have the next question from Mr. Rahul D. Please go ahead, sir. या नमस्कार सर. लास्ट टाइम आपके कॉनकॉल में आपने बोला था कि आपका अदर एक्सपेंस 2.5 CR से बढ़ा था बिकॉज ऑफ रिफर्बिशमेंट और वो सब आपने किया था इन दैट पर्टिकुलर क्वार्टर. आई अगेन सी आपका मेजर मार्जिन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ हायर अदर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की वजह से वापस से मार्जिन में इम्पैक्ट आया है. सो एनी हाँ या 15 सितंबर से यूनिट 7 चालू हुआ है अपना. ये जो अदर एक्सपेंस देख रहे हैं वो सारे यूनिट 7 के हैं. जो यूनिट 7 नंबर यूनिट चालू हुई है उसका सारा उसका सारा. So the new IBC factory we have started. So it started in the month of September. So now if you see the 40% capacity it is running. The expenses, other expenses are going on that account only as on date. So as the volume will increase, it will definitely come down. Yeah, I get your point कि आपका जैसे वॉल्यूम और प्राइस रियलाइजेशन इंक्रीज होगा तो आपको बिकॉज ऑफ हायर लोअर बेस जो इंक्रीज होगा आपको बेनिफिट होगा इन मार्जिन्स. बट ये अदर एक्सपेंस आप जो नए प्लांट्स में करते हो, कैन यू गाइड कि क्या एग्जैक्टली होगा? तो आपके आगे जाके भी बहुत सारे ऐसे नए प्लांट्स आने वाले हैं बिकॉज यू हैव टेकन अ न्यू लैंड एंड आपको MOU भी मिल चुका है. तो कितना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप बता सकते हो या एक कुछ अमाउंट बता सकते हो कि ये जो नए प्लांट्स के एक्सपेंस होते हैं, तो कैन यू गाइड ऑन दैट? यूनिट 7 जो है अभी 40% के आसपास चल रहा है. जैसे ही ये थोड़ा और बढ़ेगा उसमें मार्जिन आज भी मिल रही है.
यूनिट 7 से भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, ब्रेक इवन हो नहीं चुका मैं है। आपको सिर्फ अदर एक्सपेंस के रिलेटेड ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि सर ने बोला कि आपका, मैं देख रहा हूँ ट्रेंड 13 CR था इन जून क्वार्टर, अभी सीधा 17.5 हो गया है, और परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेसिस में भी चलो, इफ आई सी योर रियलाइजेशन भी डिक्रीज हो रहा है, बट वो एक कुछ गाइडेंस, जैसे आपने लास्ट टाइम रिफर्बिशमेंट बोला, तो ये यूनिट 7 में एग्जैक्टली क्या अमाउंट रहेगा एडिशनल आपने जो डाला है, और क्या रीजनिंग है उसका? एक्सपेंस तो उतना ही रहेगा यूनिट 7 में। अब जैसे जैसे और कैपेसिटी बढ़ेगी और वहाँ कैपेसिटी ऐड होगी, उसमें एक्सपेंस उस रेशियो से नहीं बढ़ेगा। जो अलग एक्सपेंस जो बढ़ गए हैं सारे, जो जो मेन मेन आदमी रखना है, जो भी है किसी के इंजीनियर, ये वो सब आ गए। अभी लेबर के वेल ऐड होंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। Thank you. We have the next question from Mr. Dhiral Shah. Please go ahead, sir. Yeah, good afternoon, sir. Thanks for the opportunity. So, what is the reason for becoming very aggressive on the metal drum side? ये कैपेसिटी बढ़ा रही है ना, मैंने यूनिट 6 के बगल में भी जगह लिया है, उसमें कैपेसिटी उसकी डबल कर दी है। अभी करीब करीब वो जो मशीन कुछ ऐड किए रहे हैं, तो 80 से 90 हजार ड्रम महीने के बनने लगेंगे, जो अभी हम 40 हजार ड्रम की कैपेसिटी। Basically, we have started our preparation now only because, so if you see, if I have to add customer, I have to send them sample. Some of the customer will take 1.5 months or something like that. So we have been pushing all the customers. So our target is to achieve from 30,000 to add customers for 50,000 capacity. And then immediately we will gonna add capacity to 90,000 drums. So we are there. We have been strategically doing it very aggressive for this quarter, and going forward we're gonna do that so that we'll achieve the numbers fast. But sir, it being a low margin business, why not shifting our customer from metal drum to polymer to maybe IBC side? ये कोशिश रहती है सर, कुछ केमिकल प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उनको मेटल ड्रम में चाहिए। So it's a parallel market. It is not like if some chemicals which are being packed in metal drums, it will be packed in metal drums only. And there are many chemicals which can be complementary. So we are getting customers, this metal drums customers, complementary with our existing customers. So why not serve them also? उसका और बेनिफिट है, मेटल ड्रम वाले को आईबीसी और पॉलीमर ड्रम भी लगते हैं। जो कस्टमर मेरे पास मेटल ड्रम के लिए आ रहा है, उसके लिए हमारे को बिजनेस पॉलीमर और आईबीसी का भी मिल रहा है। Yes. Okay, so now when chemical sector outlook is a bit weak, so what will drive the overall demand for the drum business particularly? इतनी आउटलुक इतनी खराब नहीं है केमिकल की, जो खराब है वो है जरूर, लेकिन जैसे जैसे वो मार्केट ठीक होगा, अपना ग्रोथ का वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं 10-12% है, वो बढ़ता जाएगा। उससे वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, ग्रोथ उनकी कम होने के बाद भी, लेकिन वो जैसे जैसे मार्केट सही होगा और भी अच्छा होता जाएगा। ओके सर, ये जो महाराष्ट्र यूनिट का जो प्लांट है, जो फर्स्ट फेज हम करने वाले हैं, तो सर वो कब तक आ जाएगा सर ऑन स्ट्रीम? 2026 के बैलेंस शीट में आ जाएगा सर। 2025 एंड तक हम समझते हैं, यहाँ से 12 महीने में फर्स्ट फेज चालू हो जाना चाहिए। ओके, तो मे बी रेवेन्यू FY26 से आएगा बुक पे, विच विल बी 150 करोड़ एट दी फुल कैपेसिटी। नहीं, पार्टली फर्स्ट फेज लाइन इफ वी इम्प्लीमेंट, एंड जो मार्केट से हम 50% के आसपास ही समझ रहे हैं कि हम लगाएंगे, और तो एक साल में हमको 50% ही बुक होगी मशीन। उस हिसाब से वो 150 करोड़ का रेवेन्यू बता रहे हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you. Anyone who wishes to ask a question, please raise your hand using the reaction button. We have the next question from Mr. Priyank Parekh. It's a follow-up question, sir. Please go ahead. Yeah, thanks for the opportunity again. सर, हमारा FY25 के एंड तक का कैपेक्स प्लान फ्रॉम दिस पॉइंट कितना है? लाइक हाउ मच वी आर गोइंग टू डू पोस्ट December 23? पोस्ट December 23 फ्रॉम नाउ यहाँ से वहां तक अगर अपना कंप्लीट होता है तो उसमें कौन से था इस साल में? जनवरी 24 में अभी। हाँ, अपना मार्च 25 तक का। मार्च 25
till next financial year. 50 करोड़ के आसपास आ जाएगा सर. ओके 50 करोड़ के आसपास आ जाएगा. एंड अपना अभी का कैश बैलेंस कितना है एट द एंड ऑफ दिसंबर 23 क्वार्टर? 20 करोड़ के आसपास होगा. 20-22 करोड़ का होगा. ओके ओके. सो हिस्टोरिकली हम 40 करोड़ के आसपास, हिस्टोरिकली अगर देखें तो हम अ, अ, जो लेवल है अभी रेवेन्यू का, उसके हिसाब से हम CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 40 करोड़ तक कर देंगे. एंड प्लस ये 20 करोड़ का है, तो हम वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी एक्सटर्नल फंडिंग फॉर कैपेक्स, राइट सर? दैट इज द राइट इंटरप्रिटेशन? Yes, yes, absolutely, definitely. This is planned accordingly. Okay, got it, got it. And sir, just like how you see it, मुझे खाली वो जानना है कि इन केस अगर डिमांड आउटलुक जैसे हम सोच रहे हैं वैसा नहीं आया, तो आर वी ओपन टू पोज आर कैपेक्स प्लान्स? नहीं सर, ऐसा तो डिमांड है अभी, ऐसा लग नहीं रहा है. ऐसा तो नहीं सोच रहे कि क्लोज कर दें. नहीं, पोज आई मीन टू से कि उसको थोड़ा पोस्टपोन करें. देख रहा हूँ, देखिए जब मैं नए लोकेशन में जा रहा हूँ वहाँ डिमांड ऑलरेडी है. मैं वहाँ नहीं हूँ इसलिए वो सेल नहीं मिल रही. वहाँ डिमांड ओके, नहीं गॉट इट. है. वहाँ डिमांड नया कोई कस्टमर आएगा ऐसे नहीं. ऑलरेडी मार्केट है उतना बड़ा वहाँ पर. उसी मार्केट को मेरे को लेना है. ओके, सो जो मेजोरिटी हमारा कैपेक्स होगा वो नए यूनिट 9 में ही होगा, वैसा आप बोल रहे हैं ना? नए महाराष्ट्र में होगा. और भरूच में तो जो कैपेक्स होना हो गया, उसमें मशीन जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आएगी वैसे वैसे मशीन ऐड होगी. बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है. ओके, सो जो हमारा एक नया मशीन आना है यूनिट 7 में IBC के लिए, उस पे कितना कैपेक्स लगेगा प्रोबेबली? उसमें कोई 3-4 करोड़ रुपए आएंगे. ओके, गॉट इट. सो एक्सेप्ट दे 3-4 करोड़ यहाँ पे भरूच के यूनिट में कोई कैपेक्स नहीं लगेगा? लगेगा. कभी हो सकती है 1-2 करोड़ रुपए की कोई मशीन जरूरत हुई तो ले सकते हैं. उसमें ऐसे कुछ नहीं है. ओके ओके. सो दैट वाज ऑन कैपेक्स साइड. एंड सर, जो प्रीवियस टू प्रीवियस पार्टिसिपेंट ने एक हमारे अदर एक्सपेंस पे क्वेश्चन पूछा, तो हमारा जो अभी का EBIT जो अदर एक्सपेंस का लेवल है दैट इज अराउंड 18 CR, तो दैट शुड बी कंटिन्यूड गोइंग फॉरवर्ड. मतलब उससे कम तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, बढ़ेगा. ओके, डिस्पाइट. रखेंगे आप, आदमी रखेंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे, सेल में आएगा, या ट्रांसपोर्ट में माल भेजने का एक्सपेंस आएगा, उस सब एड ही होगा ना. जैसे जैसे सेल बढ़ेगी अदर एक्सपेंस तो बढ़ने ही वाला है. ओके ओके, गुड. कम हो जाएगा. वो परसेंटेज कम हो जाएगा. वो परसेंटेज हाँ, वो नहीं रहेगा. परसेंटेज ऑफ कोर्स आपका ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ेगा तो परसेंटेज कम हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल पे बढ़ेगा यहाँ से. बढ़ना ही अच्छा है सर. ओके, या थैंक यू. Thank you. Anyone who wishes to ask a question, please raise your hand using the reaction button. We have a follow-up question from Mr. Runit Kapoor. Please go ahead, sir. So just wanted to understand, like for these IBC products and even polymer product, like what is the shelf life for the customer, for your clients, like use it over like 6 months? 1 year shelf life, but it has got shelf life of more than that. But generally, in writing, we give 1 year shelf life. It will basically, we calculate the shelf life on the basis of SDP companies, what they are giving to us. Sorry, your voice is cracking. The shelf life, what we give to the customer is 1 year from the date of manufacture. Okay. And just one more thing was that based on your optimum utilization of unit 1 to 8, what would be your expected revenue you can achieve based on this? Once, see, unit 8 is already, see, unit 7, I'll tell you, unit 7 is at 40%. So right now we are getting somewhere around 4 CR. So it has a capacity, of 8 to 10 crores monthly basis. So crore No, I'm asking assuming like based on. तो माने वहां पर 250 करोड़ तक का यूनिट 7 तो रेट जो मर्ज कर दिया, 250 करोड़ तक का बिजनेस मिलेगा हमको वहां. Okay, so around like 750 to 800 crores, you're saying basically.
you can achieve based on these 8 units? From current level, it will be around 700 to 750. Okay. And just the last question was, can you just give an overview of your segment-wise EBITDA margins? Segment-wise, EBITDA margin for polymer drums, For 9 months will be. पॉलीमर ड्रम में हमारा 8.22 है, आईबीसी में 30 है, मेटल ड्रम में 2% समथिंग है, 2.12 है। ये 9 महीने IBC में you said how much? 12.30. IBC was how much? 12.3%. Okay, and 2% was metal drum was 2%. 8.5% पॉलीमर ड्रम में। Okay, fine. Thank you. Yeah. Thank you. Anyone who wishes to ask a question, please raise your hand using the reaction button. So we have the next question from Mr. Vikas Katuri. It's again a follow-up question. Please go ahead, sir. Sir, namaste. Sir, sir, आपके जो trucks हैं, वो they are used for delivering your products to the customer, sir? Yeah, उसके लिए। अच्छा, तो फिर जो वापस आने के टाइम फिर खाली आएंगे सर वो? खाली आते हैं सर। Okay, all right, sir. Thank you. That's it. Thank you. Anyone who wishes to ask a question, please raise your hand using the reaction button. We have the next question from Mr. Ganesh Kumar. Please go ahead, sir. Sir, am I audible? Hello, हाँ, बोलिए. Yes, sir. Okay, so what is the amount of inventory that you hold for your polymer products? Because from the reports that I read, because their prices are going down, it's affecting your the mark to market of your stock in trade and hence the profitability. That's what I'm assuming. So how much of inventory do you hold and how long does it take for you to pass on the price rise or price down to the customer? लगभग 1 महीने का सर हमारा स्टॉक रहता है पॉलीमर का। 1000 से 3000 टन रहते हैं स्टॉक। और प्राइस जो डाउन हो रहा है, ये हर समय नीचे डाउन हो रहा है तो रुक रहा है, नहीं तो ये चेंज होता रहता है। एवरेज प्राइस हम लोग ये देखते हैं कि साल भर में देखें तो एवरेज प्राइस एक ही आ जाता है। ये पहली बार है कि इस ढंग से नीचे आया पूरे साल में। Got it. So a very, very tangential question. Just forgive me for asking. Since the chemical industry, it's a lot more affected by cheaper imports from China, or basically price breakdown of chemicals that China is probably exporting or dumping everywhere in the world. Do you anticipate it affecting your business because the production in India might be slowing down? नहीं सर, सब अपने बिजनेस को सेव कर रहे हैं। इंडिया में केमिकल वाले भी हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं, इतना बुरा नहीं है। वो भी कंपटीशन में आते ही हैं। वो अपने बिजनेस को बंद थोड़ी करेंगे सर। भी अपने लगे हैं, कैसे भी सर्वाइव तो हो रहे हैं, सब अच्छे से हो रहे हैं, अच्छा ही आ रहा है। Good, we have a government which is which is supporting Indian companies. So the Indian outlook is good in future. बहुत बुरा नहीं होने वाला सर। केमिकल इंडस्ट्री जो भी है वो सब सर्वाइव अच्छे से सब सर्वाइव हो जाएंगे। ये ठीक है, टेम्पररी फेस है उनके लिए। Okay, sir. Thank you. That's all from my side. Thank you. We have the next question from Mr. Kaushal Shah. Please go ahead, sir. Hi, sir. I just wanted to know what's the revenue mix between your 3 products? 36%. So major of the income comes from IBC, right? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखेंगे तो पॉलीमर ड्रम से रेवेन्यू ज्यादा आती है, सेकंड आईबीसी से, और तीसरा रेवेन्यू मेरे को मेटल ड्रम से है। ओके, मार्जिन वाइज आईबीसी ज्यादा है, सो आईबीसी ज्यादा है, फिर उसके बाद पॉलीमर ड्रम है, फिर एमएस ड्रम।
So 4 to 5 years down the line, what do you expect the revenue mix to be? नंबर 1 तो आईबीसी रहेगी सर, पॉलीमर ड्रम और मेटल ड्रम। मतलब वॉल्यूम वाइज भी आईबीसी बढ़ेगा ना? अब वॉल्यूम वाइज आईबीसी बढ़ेगा और मेटल पॉलीमर भी बढ़ेगा। ये ज्यादा वॉल्यूम से बढ़ने वाला आईबीसी है हमारा। हाँ, ओके। तो सर अभी where is this IBC used in chemical sector also, and apart from chemical industries there is use for the IBC? केमिकल सेक्टर, ओनली केमिकल में ही यूज होता है। So उसमें भी उसका लाइफ क्या रहता है? लाइक इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, राइट? जनरली वो एक बार लेते हैं, ले जाकर वो बाहर चल, जिसके कस्टमर के पास जाता है वो उसके बाद उसका यूज करता है। तो हाँ, लाइक chemical industry would be supplying it to their customers, so it is with the customer of chemical industry, or it comes back to the chemical company back? No, once you are exporting, it is not possible to get the IBCs back. Maybe the IBCs will come in the form of packing of chemical in India, but empty IBCs you cannot import in India. You cannot import. Okay, fine. That was it. Thank you. Thank you. Thank you. Anyone who wishes to ask a question, please raise your hand using the reaction button. I think there are no further questions. Sir, I'd like to hand over the call to you. So as I said, the prices have reversed and the good things comes at a good time. So by year end, we hope we give good numbers. And by this note, I would like to thank everybody to join us and keep supporting us. Thank you so much. Thank you. Namaste. Thank you. Thank you everyone for